Yes, sir. Okay. So based on the problem, what we did was we identified decision variables. There were the decision variables. We identified them as A and B. A indicates number of type A vehicles to be used. B indicates number of type B vehicles to be used. And then we started with our formulation, where is the objective was to maximize the cold transfer. Since the vehicles can carry, type A vehicles can carry 2 tons, type B vehicles can carry 3 tons. So my objective function becomes Z equals to 2 times number of vehicles of type A plus 3 times number of vehicles of type B. Correct? So I will have to maximize this. Number of type A vehicles and number of type B vehicles to be used, so that my total cold transfer is the maximum. Are we okay up to this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then our constraints. Constraints means the factors which are limiting your performance. So one was your diesel, second number of drivers, and third the number of vehicles of each type which is available. So diesel can be written as 100 into number of type A vehicles, 15 100 into number of type A vehicles, and 200 into number of type B vehicles should be less than or equal to 4,000. Then we said number of drivers which are required. So one for type A, one for type B. So 1 into number of type A vehicles plus 1 into number of type B vehicles should be less than or equal to 30, which is my this second constraint. Type A vehicles which are available are only 26. So A has to be less than or equal to 26. Similarly, B has to be less than or equal to 15. So this becomes my constraints. Fine. Obviously, a non-negativity constraint, which is A and B has to be either 0 or more than 0. Okay. So after that, we worked it out on using a graphical method. So we identified 2 points for first constraint, 2 points for the second, third, and fourth, and accordingly it was plotted on this side. This is my common region which has been identified. After that, what we did was we identified the extreme points, and on those extreme points we identified the total coal transfer, the diesel that was getting used, type A vehicles which were getting used, number of type B vehicles which were getting used, and the number of drivers which were getting used. So basically, we can call this completely as resource utilization. So if somebody asks you to talk about this, is what you will work out for various options which are available. So out of the options which are available, this is the one which gives me the maximum coal transfer, this and this. These are the two options, that is 1015 and 2010. So if I say 1015, so that means I'm referring to this point, and 2010, that means I'm referring to this point. So that means possibility है कि इसके बीच में का I can have multiple optimal solution even here also. Okay. Are we clear up to this? Yes, sir. After that,
what we did was we started looking at how the simplex table actually works, the actual method, okay, with which the problems are solved. The simplex table which we are using when we are using solver also, that time we always say simplex LP. So it is nothing but actually a matrix based solving method. So what we do in that is we convert all our equations, okay, into proper linear equation with the inequalities removed. So that means LHS is less than or equal to RHS. This is what it means. So that means say LHS is less than or equal to RHS. It means LHS plus something will be equal to RHS, correct? And this something can take a value, okay, from 0 to anything, or rather 0 to RHS. So if my LHS translates to 0, this something will be equal to RHS. And if my LHS is almost equal to RHS, then this something would be equal to 0. So this something is going to take a dynamic value. Okay. We call this something as slack variables. Are we clear up to this? Any doubts, any confusions? No, sir. Okay. So what we did was we converted the first equation into a linear equation without the inequality. So we added a slack variable called as S1. Okay. Similarly, we converted the second one also and we included a slack as S2. For third was A. Since it is not having any B component, so coefficient of B would be 0 plus S3, that is your third slack variable, equals to 26. Similarly, for this equation, coefficient for A would be 0 plus B plus S4 equals to 15. So my equations will take the shape like this. Fine. Now, whatever slack variables that I have included here needs to be included in my objective function also, so that uniformity is maintained. I cannot just skip them. So what is the other way out to reduce the impact of slack variables in your objective function? क्योंकि अगर slack variables का value बहुत ज्यादा हो जाएगा तो automatically 2a plus 3b का contribution नहीं मिलेगा, ज्यादा अपने को S1, S2, S3 और S4 का मिलेगा. So to just take care of that, what we did was we gave a coefficient as 0 to S1, 0 to S2, 0 to S3, and 0 to S4. Are we okay up to this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, when we start working it around, okay, so what we did was, ये जो मेरे I have just noted down those equations here and I have converted it into a table, okay, whereas this Cj indicates the coefficient of your objective function. Can you see this? 2, 3, 0, 0, 0, 0. So 2, 3, 0, 0, 0, 0. Fine. Then these are indicating my, so these are your fine coefficients of your objective function. Now coming to the first equation, so we have written the coefficients of A
B S1. Now since first equation is not having S2 and S3 and S4, so the coefficients for them would be 0, 0, 0. Are we okay up to this? Yes, sir. Okay. Now, going forward on the same lines, you will do it for second equation. Now, since second equation is not having any S1, so coefficient for S1 would be 0, but for coefficient for S2 would be 1. Okay, so S3 and S3 and S4 would be 0. Similarly, for the third equation, so coefficient for A is 1, for B is 0, for S1 0, S2 0, S3 it would be 1, and S4 it would be 0. Fine up to this? Yes, sir. Okay. S4. So here coefficient for A would be 0, for B it would be 1, S1, S2 and S3 it would be 0. So आपका S1, S2, S3 तीनों के लिए 0 आ गया, and for S4 it would be 1. These are your RHS values, which are nothing but your resource limitations. Okay, so ये equation cut is 4000, 30, 26 and 15. Fine up to this? Yes, sir. We always start with S1, S2, S3 and S4 because our objective is to eliminate these from your objective function. So automatically the value for now, as of now, these are the coefficients of S1, S2, S3, S4. Okay, so as of now, we will say the value for S1 is 4000, for S2 it's 30, for S3 it's 26, and S4 it is 15. That automatically says that my Cj minus Zj, or rather the objective function value, would be almost 0. क्योंकि अगर मेरा कोएफिशिएंट्स में इन सब का वैल्यूज ज्यादा रहेगा, so टोटल ए और बी इधर पर है ही नहीं, so that means ए और बी का वैल्यू 0 है, बाकी S1, S2, S3 and S4 have these higher values, so automatically my Z is equal to 0. Are we clear up to this? Any doubts? So could you please explain this once again? Okay. What this part says is we are starting with S1, S2, S3 and S4. Let us understand the physical interpretation of what we are doing. Okay, so this says S1 equals to 4000, S2 equals to 30, S3 equals to 26. Now just look at this. If S1 is equal to 4000 in this equation, so that means 100 into A plus 200 into B is equal to 0, correct? Yes, sir. Yes, sir. So what we are doing is we are giving the slack values the highest value, and we will reduce them or eliminate them subsequently in the next iterations. Okay, so we are going to start with S1 equals to 4000, S2 equals to 30, S3 equals to 26 and S4 equals to 15. Are we clear up to this? Any confusions? No, sir. No, I'm sir. yet to work out these things. Okay, all these things are yet to be done. Fine. अभी तक हमारे इसमें सिर्फ इतना ही है. Now we'll calculate the value of Z. The value of Z would be calculated like this: equals to 0 into 100 plus 0 into 1 plus 0 into 1 plus 0 into 0. So अब A के लिए क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है वो आपको मालूम पड़ेगा. So
since it is one array with another array, so we can use the function sum product of this array, comma, this array. This array I am going to use again and again, so better let me freeze it. And I say enter. So obviously, since I am multiplying all these values by 0, so I am going to get 0. Fine. I will do it for the other one also. Since all these values are also getting multiplied by 0, so I will get a 0. For this also I will get a 0 here, here, here. So at all the places, what I am going to get is a 0. Fine. But what about this? Here also it would be a 0 because I am multiplying these coefficients with these. So automatically, since the coefficients of S1, S2, S3 and S4 are 0, so uska S1, S2, S3, 4 का कितना भी value हो जाए, your Z value, that is objective function, will be 0. Are we clear up to this? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? Next thing is, अब इसमें से कोई ना कोई तो हमको इस मैट्रिक्स में से एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे हमको मालूम पड़े कि किसको हमको लाना है. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई? फर्स्ट थिंग इज किधर पर का गैप सबसे ज्यादा है और हम किधर से हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है. सो इफ फॉर दैट व्हाट वी डू इज cj minus zj. So that means this cj minus this value. So that means 2 minus 0. So it will start giving me equals to this value minus my objective function value. Sorry, माइनस की जगह मैंने कॉमा डाल दिया. फाइन. So I will do it for all. So 2 minus 0 will give me 2, 3 minus 0 will give me 3, 0 minus 0 will give me 0 and so on. Now सबसे ज्यादा मुझे cj minus zj वैल्यू यहाँ पर मिल रही है. So that basically says that if I should consider this, so this will be able to contribute maximum to my objective function, which is true also. अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये 3 टन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है. करेक्ट ना? अगर आपको भी लॉजिकली अगर बोला जाता कि भाई आपको मैक्सिमम कोल ट्रांसफर करना है, तो जो व्हीकल का कैपेसिटी ज्यादा है, आप सबसे ज्यादा उसको लोड करते थे. करेक्ट? Yes, sir. लॉजिकली यही करेंगे. सो दिस ऑल्सो सेज कि आपको इसको बी वेरिएबल को कंसिडर करना चाहिए इन द मैट्रिक्स. बट अगर मेरे को बी वेरिएबल को लाना है और मेरे पास में 4 इक्वेशंस थे, 4 ही रोज हैं, तो अगर बी को मैं इधर पर अंदर लाऊंगा तो किसी एक को तो बाहर निकालना पड़ेगा. सो किसको बाहर निकालना है? सो दैट इज एक्चुअली आइडेंटिफाइड बाय कैलकुलेटिंग थीटा. ओके, थीटा इज नथिंग बट RHS डिवाइडेड बाय जो आपने कॉलम आइडेंटिफाई किया है, जो एंटर करेगा उसका. सो यू कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू RHS अपॉन एंटरिंग वेरिएबल एलिमेंट्स. तो उसको एक सेकेंड, एंटरिंग वेरिएबल कॉलम एलिमेंट्स. तो उस कॉलम के जो भी वैल्यूज रहेंगे उनको आपको लेना होगा. फाइन. सो
Okay. Fine. Are we able to see this? So अब उसके हिसाब से we will start calculating our theta. So RHS divided by जो entering variable है उसका value, उसका member element. So equals to this divided by this one. Okay, we'll have to do it for all. And RHS is this theta is not calculated wherever you find a zero element or a negative value, zero or negative. Okay, so can you repeat what you said? Zero I'm and just saying theta is not to be calculated wherever you have member entering variable column member less than or equal to 0. Are we clear yahan tak? Wherever theta, the entering variable column member is either 0 or negative, you should not evaluate theta for those particular rows. Okay, so yahan par you will not calculate theta because it is divisible by 0, so that will always give you an error. Divide by 0 error. Fine. sir, one request. Can you show Yes. what the both sentences you have written? One. The entire statement. Yeah, sir. Sir, done. Okay. So now since I am calculating, I am getting an error here. So अब अगर इसको मेरे को Excel में बड़े प्यार से करना होता तो I would have said if error, okay, and if this thing is going to return an error, it should only just print blank. अभी इधर के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. Fine. Are we okay up to this? अपने आप ही वो डिवाइड बाय 0 एरर देने की जगह हटा देगा. Are we okay up to this? Yes, sir. Fine. अभी हम करते हैं. Now the least value of theta will be considered as living variable. तो जहां कहीं पर भी आपका लीस्ट वैल्यू आता है, सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दिस इज माय लीस्ट वैल्यू एंड हेंस दिस विल बी कंसिडर्ड एज माय living variable. So S4 will leave and B will enter the matrix. So अभी यहाँ पर S1, S2, S3 वो वैसे ही रहेगा. Okay, and B will come. Fine. So यहाँ पर coefficients में जो S1 का coefficient है, जो S2 का coefficient है objective function में, that same thing will come. यहाँ तक okay है? अपना decisive जो है वो actually ये है. ये this will tell me, this will indicate the entering variable and theta will indicate the
लिविंग वेरिएबल। मैं आप लोगों को जो भी कुछ अभी इस वक्त बता रहा हूं, ओके, वो बुक्स में इजीली समझ में नहीं आएगा। ओके, सो जो भी डाउट्स है अभी करके ले लो। मोस्टली this will not be coming for your examination, so you may not be required to do it manually like this in the examination, because अगर मैं ये एक देता हूं तो आप एक घंटे में सिर्फ एक ही कर पाओगे। फाइन, so most probably 99.99% you will not be asked to do simplex LP manually, okay? बट आपको पता होना चाहिए Okay, sir. एक्चुअली में दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। जब हम लोग सॉल्वर में एलपी सिंप्लेक्स एलपी यूज करते हैं ना, तब वो ये सब कुछ करता है बैक एंड में। सो नाउ आई विल रिकैलकुलेट, S4 की जगह पर मेरा बी आ जाएगा एंड बी विल बी ये पूरा फुल रो डिवाइडेड बाय द पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट इज द इंटरसेक्टिंग एलिमेंट। तो आप इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, सो दिस बिकम्स योर पिवट एलिमेंट। सो पिवट एलिमेंट से आप ये पूरे रो को डिवाइड करोगे, दैट बिकम्स द कोएफिशिएंट फॉर बी। सो 0 divided by 1 would be 0, 1 बेटर है मैं इसको हटा ही देता हूँ। I'll put it equals to this 0 divided by this same value, and it will be used again and again. Okay, so 0 divided by 1. Similarly, on this 1 divided by 1, so it would be 1. We'll have to do it till RHS. So 0 divided by 1 would be 0, 0 divided by 1 would be 0, 0 divided by 1 would be 0, 1 divided by 1 would be 1, and 15 divided by 1 would be 15. Okay, अब जब आपको ये वैल्यू मिल गई है, this has been your entering variable. Now you need to ensure that you get zeros in all these 3 cells. So उसके लिए हम कुछ ना कुछ रो या कॉलम ऑपरेशंस करेंगे। नॉर्मली हम इसमें पूरे रो ऑपरेशंस पे ही फोकस करते हैं। ओके, अब अगर मुझे S1 लिखने S3 लिखने जाना है तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 आ ही रहा है, सो मुझे इधर पर कुछ भी ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन राइट दैट S3 एज इट इज, सो आई विल नॉट डू एनी ऑपरेशंस देयर। ओके, तो हम वैसे कर सकते हैं, या फिर हम S4 माइनस S3 करेंगे तो भी आएगा, बट वैसे में फिर इधर पर -1 आ जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। हेलो, Yes, sir. ओके,
So we will be, for S3 we will not carry out any operation because we already have a 0 in place and rest of the elements are also ones and zeros. So we need not worry about it and we can just simply write whatever is the coefficients there. So till RHS the same operation is to be done. Fine. Okay, sir. Now coming to S2. S2 के इधर पर क्या हो रहा है? 1 है. We don't want 1 to be coming at this place. We want a 0 here. So हम क्या कर सकते हैं? S4 minus S2 कर सकते हैं, correct? But ये वाला S4 नहीं, अभी S4 की जगह पर we have a B. So this is what is going to be used. Okay. So what we are going to do is, it would be this minus this B. Okay. So if I say इन दोनों को अलग से हम लोग just ऐसे ही लिख लेते हैं. So it would be easy for us to work around. ये मेरा S2 वाला आ गया और ये मेरा B का वैल्यू है. फाइन. अब मुझे रिजल्टिंग यहां पर मैं इस पर्टिकुलर जगह पर मुझे 0 ही चाहिए. ओके. सो व्हाट इज द वे आउट? अगर इधर 0 चाहिए तो यूजिंग B को मुझे यूज करके करना है. तो हम लोग इसमें नॉर्मली क्या करेंगे? विल राइट इट एज S2 minus B. So operation that we are going to perform here would be equals to S2 minus B. So you will do it for all. Fine. इसमें अभी कुछ जगहों पर आपको शायद लॉजिक नहीं बैठेगा, कुछ समय बाद में आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो this at this place we will say S2 minus B so that I get a 0 here. So it would be, this is my S2 equals to S2 minus my new values of B. So I'll pull it all across for all the values. Now S1 में भी यहाँ पर मुझे 0 चाहिए बट इधर पर 200 है. क्या करना होगा? अभी ये S1 का वैल्यूज हम लोग उधर पर ले लेते हैं. यहां पर डाल देता हूं मैं. यहां पर मुझे 0 चाहिए. सो दैट मीन्स अगर मैं B को 200 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको S1 minus 200 into B करूं, so हो जाएगा क्या? Will I be able to get a 0 here? Yes, sir. So हम लोग अभी S1 minus 200 into this value. So I will do it for all. तो 100 कैसे आया? Can you tell me? Sorry? Sir, S1 में 100 and 200 कैसे आया? Can you repeat please? ये रहा S1 जो मैंने इधर yes, से sir. कॉपी करके इधर पर रखा हूँ. अच्छा, ओके. ये मैं सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशंस क्या करने का है, लॉजिक कैसे वो होगा कि हमको रूल क्या लेना है वो डेवलप करने के लिए बताया हूँ. ठीक है. नहीं तो क्या ऐसे इधर ही पर डायरेक्ट करूंगा ना तो इट वुड बी टू कंफ्यूजिंग. इसके लिए मैंने उसको इधर साइड में रखा है. ओके. मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये पर्टिकुलर कॉलम में अभी ये सब 0 आने चाहिए, तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए. ओके. एक तरह से देखा जाए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है
इसको रिड्यूस करके यूनिट मैट्रिक्स पे लेके आएंगे. यूनिट मैट्रिक्स मतलब इट विल ओनली हैव वन इन द डायगोनल एलिमेंट्स और बाकी जीरोस हैं. तो मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पर एक 1 है, तो मुझे बाकी के सब जीरो करने हैं. ऐसे ही इसमें भी एक और 1 आएगा, बाकी को सबको जीरो करने की कोशिश करनी है धीरे धीरे करके. आर वी क्लियर अप टू दिस? सो कोई कुछ बोलता ही नहीं है. S1 minus 200 into B would be my next operation which I am going to do. So equals to, this is my S1 minus 200 into my B. This is my B जो हमने नया कैलकुलेट किया था, और we'll just drag it across. Now ये मेरा पहला वाला टेबल के ही जैसे ये दूसरा टेबल बन गया, which is reduced, and now it says my S1 is 1000 and my B is 15. Now let us look at this. When my B was 15, vehicles used, B was 15, correct? उस वक्त आपका ये क्या हो रहा है? डीजल यूज्ड 3000, मतलब स्लैक वेरिएबल का वैल्यू कितना 1000 रहा होगा, बराबर ना? Yes, sir. So is this indicating towards the same? S1 equals to 1000 and B equals to 15. So that means we are referring to actually point 0, 15, wherein value for A is 0 and B is 15. इधर तक ओके? So, can you repeat this once again? देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि we are starting with S1 equals to 4000, S2 equals to 30. So ठीक उसी तरह से this says now S1 equals to 1000, S2 equals to 15, S3 equals to 26 and B equals to 15. Correct? So जब मैं B equals to 15 बोल रहा हूँ and I don't have A here, so that means A is equal to 0. So that means I am referring to 0, 15. And at 0, 15, if I again relook at my earlier table, 0, 15, it says 0 type A vehicles, 15 type B vehicles will result in 45 tons of coal transfer. देखते हैं अभी हम लोग, ये अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया. But diesel utilization is 3000, मतलब स्लैक वेरिएबल S1 आपका कितना होगा? 1000. Yes. ये देखिए S1 इक्वल्स टू 1000 है इस टाइम पर. ठीक इसी तरह से आप अगर S2 कैलकुलेट करने जाएंगे, सो इक्वल्स टू, ये आपका S2 क्या था? नंबर ऑफ ड्राइवर्स, करेक्ट? सो दिस माइनस वो टाइम पर अगर मैं डीजल के लिए देख रहा हूँ, ठीक है? सो एनीवे उसको हम लोग डीजल नहीं, इसके लिए आएगा नंबर ऑफ ड्राइवर्स यूज्ड.
ये देख रहे हैं 15 अगर टाइप बी व्हीकल यूज किया तो आपका S2 वुड बी 15 क्योंकि 30 ड्राइवर्स है ना आपके पास में। अगर A इक्वल्स टू 0 और B इक्वल्स टू 15 अगर मैं वैसे लेकर के करता हूं तो ऑटोमेटिकली 15 ड्राइवर बचेंगे। यहाँ पर 5 क्योंकि 10 और 15 25 ड्राइवर आपने यूज कर लिए तो 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर आपने 30 के 30 यूज किए तो आपको कुछ भी स्लैक नहीं बचा। यहाँ पर 26 यूज कर रहे हैं तो आपके पास में 4 स्लैक बचा है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ दिस पॉइंट इज एक्चुअली रेफरिंग टू 0,15। यहाँ तक ओके है? हेलो, So what formula did you use in order to get those column variables? ये मैंने The इधर पर डाले। so अच्छा, the ये इधर table below the S1 graph. ये S1 S2 के लिए आप बात कर रहे हो? अच्छा, दिस वन सभी की बात कर रहे हो? So the table below the graph. Yeah. दिस इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू, करेक्ट? Yes, sir. And the S1, S2 values. So have you received? Okay, if I am taking 0 units of A and 0 units of B, that means I am referring to this point, okay, in the graph. So that means neither type A vehicle nor type B vehicle. So my code transferred would be my objective function, that is 2 into type A vehicles plus 3 into type B vehicles. So my total code transfer is 0. Similarly, at this juncture, my total code transfer would be 0 into number of type A vehicles plus number of type B vehicles and so on. So ये मेरा उस हिसाब से मैंने इसको वर्कआउट किया। So मेरा total code transfer for this 2 into 20 plus 3 into 10 gives me 70. ये कॉलम ओके है? Yes, sir. Yes. So I was asking about the S1 and S2 columns I'm outside the table. coming to it. ये सारे के सारे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इसमें जो जो पॉसिबल है वो सारे। तो 0 0 0 15, this is 10 15, this is 20 10, this one is 26 4 and this is 26,0. ओके, तो उसी के लिए सबके लिए वर्कआउट किया है। नाउ S1 इज रिलेटेड टू ओके माय टोटल RHS वैल्यू माइनस LHS। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा था ये स्लैक इज नथिंग बट समथिंग, हमने लिखा था ना वैसे, स्लैक इज नथिंग बट समथिंग। सो दैट मीन्स माय दिस समथिंग और रादर slack will be equal to RHS minus LHS, करेक्ट? सो जो भी बाकी का slack के अलावा जो बाकी का वैल्यूज आएगा, so I have used that same logic here, okay? RHS minus LHS, तो मेरा डीजल यूज कितना था? ठीक उसी तरह से S2 के लिए मेरा it would be RHS minus LHS, ओके सॉरी मेरा S2 ये है, S2 ये है, टाइप ए व्हीकल्स के लिए S3 है और टाइप बी व्हीकल्स के लिए S4 है, करेक्ट? हमने इनके लिए स्लैक वेरिएबल्स ऐसे ही डिफाइन किए ना। फर्स्ट डीजल वाला जो कंस्ट्रेंट था उसके लिए S1 था, ड्राइवर वाला कंस्ट्रेंट के लिए इट वाज S2, टाइप ए व्हीकल्स इट इज S3 एंड टाइप बी व्हीकल्स इट इज S4, करेक्ट? सर S1 हमने सबको वही किया ना सर, एक्सट्रैक्युलेटिंग किया ना। हाँ, मैंने सबको एक्चुअली एक्सट्रापोलेट करके ही किया है। अभी मैंने यहाँ पर भी जब इसको वर्कआउट किया, सो S1 माइनस दिस, ठीक, यहाँ पर इट वाज अगेन S1 माइनस दिस, तो इट इज एक्चुअली एन एक्सट्रापोलेशन, दिस माइनस दिस। सो मैंने इसको फ्रीज कर दिया था बिफोर आई वर्कड इट आउट, फाइन।
Similarly, Yes. while calculating my S2, so ये इसको मैंने freeze किया because this is my RHS. This is not going to change. Minus, depending upon the number of vehicles that I am using, my LHS is changing. So यहाँ पर I am using 0 type A vehicles and 0 type B vehicles. At this juncture, I am using 0 type A vehicles and 15 type B vehicles. So I am left out with 15 vehicles still left out. Sorry, 15 drivers. ठीक है, आप इसी तरह से S3 और S4 के लिए भी वर्कआउट कर सकते हो so that you can get a clear picture. So हर एक पॉइंट पे वो स्लैक वेरिएबल्स का वैल्यू क्या आ रहा है, इससे आपको वो मिलेगा. So एक मिनट, गड़बड़ किया मैंने. हाँ सॉरी, ये लेना था. So since no vehicles are getting used, so slack variables यहाँ पर 00 के लिए it is 26, 015 के लिए हम लोग जो टाइप ए व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, दिस इज पर्टेनिंग टू टाइप ए व्हीकल एंड दिस इज पर्टेनिंग टू टाइप बी व्हीकल्स. सो सिंस हम लोग 015 बोल रहे हैं, दैट मींस आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ द टाइप ए. सो इसके लिए वो पूरा 26 का 26 है. यहाँ पर मैं 10 टाइप ए व्हीकल्स यूज कर रहा हूँ तो मैं स्लैक बिकम्स 16. यहाँ पर मैं 20 यूज कर रहा हूँ सो माई स्लैक बिकम्स 6. लॉजिकली समझा स्लैक क्या कर रहा है, हर बार वो डायनेमिक वैल्यू ले लेता है. क्लियर है यहाँ तक? हेलो. यस सर. सर वो जो स्लैक वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है ना सर, वो हाँ. क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा कि वी ourselves have to like identify in exam. नहीं नहीं, स्लैक वेरिएबल्स आप खुद से लेते हो. अगर आप जब सिंप्लेक्स यूज करके सॉल्व कर रहे हो ना, सिंप्लेक्स मेथड, तो आप ये खुद से वर्कआउट करते हो. इट इज ओनली जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली कि बैकएंड में क्या हो रहा है. और धीरे धीरे करके ना वो ये स्लैक वेरिएबल्स को ही कम करता चला जाएगा. पहले एक को कम करेगा, फिर दूसरे को कम करेगा एंड सो ऑन. ठीक है. So now I will be calculating Zj for my this table. So again, same like last time, Zj would be some product. That means 0 into 100 plus 0 into 1 plus 0 into 1 plus 3 into 0. So this, I will freeze this, comma, this one. Say, okay. So for this it would be 0. यहाँ पर के लिए क्या होगा? 3 into 1. So 3 आ जाएगा, बाकी का सब 0 0 है, इधर भी 0 है तो प्रॉब्लम नहीं है. एंड सिमिलरली यू विल एक्सट्रापोलेट फॉर ऑल अप टू RHS. RHS तक करने का फायदा क्या है? इट गिव्स मी व्हाट इज द वैल्यू फॉर योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अभी आप देखिए z इक्वल्स टू इज 45. करेक्ट ना? हम लोगों का यहाँ पर भी z वैल्यू जो था फॉर 0,15, that is this one, my z was 45. Correct? This is Are we clear up to this? This is my z. So आप देखिए 0,15 के लिए 45 आ रहा है. That is the exact same thing what we are getting here. Perfect. Yes. So we will calculate Cj minus Zj. So this would be आपका Cj क्या है? This 2.
बराबर. So equals to 2 minus your zj value. So एक तरह से देखा जाए तो अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है 2 का. What about all others? Since we have already used this, so now this has become 0, क्योंकि z का मैक्सिमम आप जो b को यूज करके कर सकते थे, आप ऑलरेडी 45 तक अचीव कर चुके हो. अभी b और आप यूज नहीं कर सकते हो. b व्हीकल्स हमारे पास कितनी थी? 15. करेक्ट ना? Yes, sir. So आपका B पूरा यूटिलाइज हो गया है. Now you have other area which is vehicle A to be used, और वो आप कितना यूज कर सकते हो. तभी हम नेक्स्ट इसमें we will bring in maximum CJ minus ZJ. जहां भी पॉजिटिव होगा it should be more than 0. Okay, so यहाँ पर है, so we will consider this now as our entering variable. हमको लिविंग वेरिएबल भी उसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लिविंग वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू RHS डिवाइडेड बाय योर एलिमेंट्स ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल कॉलम. सो आप सभी के लिए वर्कआउट करोगे, ये डिवाइड बाय 0 है. सो एक्चुअली हमको इफ एरर करके यूज करते तो बेटर था. तो अगर इफ दिस equation translates to an error, then just type blank and so 10, 15, 26. अभी लीस्ट वैल्यू कौन सी है? ये वाली है. So this becomes our living variable S1, और S1 की जगह पर अभी A आएगा. ओके, तो हम इसको एज इट इज, या पूरा ये फॉर्मेटिंग के लिए जस्ट मैं इतना पूरा ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ. आई विल रिमूव द वैल्यू. सर वो फॉर्मूला दिखाइए ना एक बार एरर का. हाँ, एक मिनट. Done? यस सर. So अभी हमारा S1 की जगह पर A will enter the matrix, S2 will remain as it is, S3 will remain as it is, and B will be also there. But अभी हमारा क्या होगा? ये मेरा एंटरिंग वेरिएबल और ये मेरा लिविंग वेरिएबल. तो उसका जो सेंटर पॉइंट है that becomes my pivot element, और pivot element से सभी को डिवाइड करेंगे. So this will be this element divided by this same element. Okay, so हम सभी के लिए इसको just as it is ले लेंगे till this point. Okay, and A का कोएफिशिएंट क्या है? 2.
S2 का it is 0, S3 का 0 और B का it is 3. ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी आपका A का भी A will be equal to 10 हो जाएगा, B का जो है वो भी देखते हैं उसको, वो भी कुछ चेंज हो रहा है क्या. ओके, नॉर्मली इट विल बी द सेम. अभी मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में इधर पर 1 आ गया, बाकी सब 0 0 0 चाहिए. सो B को सिंस वहां पर ऑलरेडी 0 है, सो आई विल नॉट डू एनीथिंग, सो आई विल जस्ट राइट B एज इट इज. सो इक्वल्स टू इधर का जो वैल्यूज है वही सेम मैं ले लूंगा. सो यहाँ पर तक के लिए वैसे ही आएगा एंड इक्वल्स टू ये भी सेम ही रहेगा. फाइन. So now my new thing would be A equals to 10 and B equals to 15. अगर मैं इधर के ग्राफिकल के इसके हिसाब से अगर मैं अपने आप को कंपेयर करने की सोचूं, so 10 15 that means my objective function will be 65. देखते हैं. और S1 S2 का S1 will become 0, S2 will be 5, S3 16, S4 का भी कुछ तो आएगा, देखते हैं क्या आता है. फाइन. S4 अभी के लिए अपना 0 हो जाएगा क्योंकि हम इस स्तर पर मैट्रिक्स में नहीं है. हाँ, अभी ये सेकंड इसके लिए मुझे यहाँ पर 0 चाहिए होगा, वहां पर 1 है. इस रो को यूज करके करना है. ठीक है, तो अभी मैं पहले ये, क्योंकि ये मेरा भी चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेता हूँ. जो हम लोग लास्ट टाइम इधर पर वर्कआउट किए थे ना, वर्कआउट करने के लिए जो यूज किया था उसी पर डालते हैं. फाइन. दूसरा, अभी मेरे को S2 के लिए वर्कआउट करना है. मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, S2 में ऑलरेडी 1 है, तो अगर 0 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस 1. Yes, sir. है ना. तो मैं यहाँ पर पहले मैं S2 माइनस A, S2 माइनस A मतलब कि क्या हो जाएगा, दिस इज माई A, S2 मेरा ऑलरेडी ये वैल्यूज है. ठीक है, तो दिस इज माई S2 and S2 minus A will be equals to this minus this. अभी मेरा प्रायोरिटी ये वाला सेल है, तो यहाँ पर मैं उस हिसाब से 0 लाने की कोशिश कर रहा हूँ. Now what has happened is S2 minus A will become, ये मेरा पहले का S2 है माइनस ये मेरा अभी का A है. S2 minus A. राइट, S2 माइनस A तक हो गया. अभी ये S3 के लिए भी एक करना पड़ेगा हमको. S3 के लिए क्या करेंगे, S3 में भी यहाँ पर 1 है, तो ठीक उसी तरह से हम लोग अगर मैं S3 माइनस A करूंगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज किया. सो दैट मीन्स दिस वुड बी S3 माइनस A को हटा दो, इक्वल्स टू, सॉरी ये मेरा S3 है, तो equals to S3 minus this is my A. So I am going to get it as, यहाँ पर सब 0 0 आ जा रहा है, so equals to
This is my S3 minus value of A equals to S3 minus value of A. So this says S3 equals to 16, S2 equals to 5 and मेरा A और B का value 10 और 15 है. Fine. So what would be my value for Z? वो भी हम लोग workout करके देख लेते हैं. So we'll work out Zj. So Zj will be equals to some product of this, which is going to be common, comma, sorry, comma, this one. So आप इसको fill कर लेंगे, extrapolate कर लेंगे till this end. We are getting it as 65. हमने वो उसमें टेबल में देखा था, इधर पर हम लोगों को Z का वैल्यू ऑलरेडी 65 ही आ रहा था ना. 10-15 के लिए Z was 65. Let us look at S2 and S3, 5 and 16. यही सेम चीज है. 5, 16. AB is 10 and 15 and my Z is 65. Correct. Now next thing would be Cj minus Zj. So equals to, मेरा Cj एकदम से ऊपर में लिखा हुआ है, this minus this is my Zj which I have calculated. We'll just pull it for all. अब मुझे मालूम पड़ेगा कौन सा स्लैक वेरिएबल कंट्रीब्यूट कर रहा है. नेगेटिव आ गया तो इसको नहीं कंसिडर करना है, बट ये वाला आपका S4 स्टिल 1 दिखा रहा है. सो दैट मीन्स हमको Cj माइनस Zj जब तक 0 या नेगेटिव नहीं हो जाता है तब तक हमको वर्कआउट करना पड़ेगा. सो एक आइट्रेशन और लगेगी. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज जस्ट ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी कर ले रहा हूँ so that I can use it as a format. बस और कुछ नहीं. So now this becomes my entering variable. Leaving variable के लिए मुझे थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा. So if this is my entering variable, तो theta is equals to RHS divided by this value. So अभी ये नेगेटिव में आ रही है, तो जो नेगेटिव में आएगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, बाकी पॉजिटिव में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उसको कंसीडर किया जाएगा. So this becomes my लीविंग वेरिएबल. सभी S2 की जगह पर S4 will come. So here we will have S4. Here it would be S, S3 and B. अभी मैं थोड़ा सा जस्ट क्विकली कर रहा हूँ. कहीं पर नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे बोलिएगा, क्योंकि वही सेम ऑपरेशंस ऊपर के जो है वही सेम हम वापस से रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, मेथोडोलॉजी इज द सेम. अब मेरा B के लिए जो वैल्यूज वुड बी this divided my pivot element, that means intersecting element, this one which I am going to freeze. So same all across equals to this 5 divided by my pivot element. तो ये मेरा as it is रहेगा. अब मेरा बाकी का वैल्यूज चेंज होगा. अब मुझे S4 वाले कॉलम में देखना है कि ये सब जीरोज रहे बाकी के, ये सिर्फ 1 को छोड़ के. ठीक है, यहाँ पर -2 है तो मतलब मुझे उसको +2 में कन्वर्ट करना होगा. सो अब मेरा ये S4 वुड बी
द मेन एलिमेंट, यहाँ पर ए की जगह पर इट वुड बी फाइन। अब यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, ये -2 है, तो क्या करना होगा, मुझे इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर दूंगा तो भी चलेगा, करेक्ट। सो मेरा ए का वैल्यूज मैं जस्ट ऐसे ही ले लेता हूँ, तो इफ आई वांट अ 0 हियर, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है, तो दैट मीन्स इक्वल्स टू दिस इंटू 2 प्लस दिस वैल्यू, तो मुझे 0 मिलेगा। तो लेट मी डू इट फॉर here also and let me do it on this side also. So it is nothing but 2 into S4 plus A. तो यहाँ पर हम करेंगे 2 into S4 plus A. तो 2 into मेरा S4 ये है प्लस A का वैल्यू ये, equals to 2 into S4 plus A. So this says A will become 20 now, ठीक है। S3 के लिए भी मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, वहां पर ऑलरेडी 2 है, सो S3 का क्या है, पूरा का पूरा मैं जैसे ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी पुट इट हियर। तो मुझे वर्कआउट करना है और यहाँ पर मुझे 0 मिलना चाहिए। यहाँ पर 0 मिलने के लिए क्या करना होगा, मेरा S4 को मुझे वैसे ही रखना है, सो दैट मीन्स S3 माइनस 2 इंटू S4, करेक्ट, बराबर ना। So that way I will be able to get this. So this is S3 minus 2 into S4. This is my S3 minus 2 into my S4 equals to S3 minus 2 into my S4। तो ये भी मेरा वैल्यू बराबर आ गया है। अभी इसमें यहाँ पर भी मुझे 0 चाहिए, सो बी इधर पर बी का जैसे लिख लेते हैं, जो भी है इधर पर भी कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि मुझे यहाँ पर 0 मिले। इट इज नथिंग बट क्या करेंगे, b माइनस S4, so b minus this value will simply give me a 0। Similarly for this side also, तो हम इसको करेंगे b minus S4, so equals to this is my b minus ये मेरा S4 equals to b
minus S4. So that means it says 20 vehicles of type A, 10 vehicles of type B. So if I look at this point here, I'm actually referring to this point, 20 of type A and 10 of type B. So अब उस हिसाब से मेरा Z वैल्यू क्या आ जाएगा, इनका सबका कोएफिशिएंट्स मैंने नहीं लिखा ना, A का कोएफिशिएंट 2 है, S4 का 0, 3 S3 का 0 और B का 3. So मेरा Zj would be equals to some product of this, which is going to be the common one, and every row. So this is my Zj. This will also be equals to some product of this and this value. 70 again. This is what is the maximum value. Let me just calculate. और भी iteration की जरूरत है क्या? तो Cj minus Zj अगर मैं calculate करता हूँ तो it is Cj एकदम से top में है minus Zj just ये immediate ये वाली value. So if I extrapolate it, I will get all my values as either 0 or 0 or negative. So that means we have to stop here and we have already got the maximum value for Z. Which is nothing but actually this point. 20, 10. So simplex नहीं है, थोड़ा सा complex है. If you look at the simplex also, what we used to do earlier, okay, is nothing but actually the graphical itself, and what it is doing is it starts from one point and keeps on optimizing, and it reached up to this point wherein the minute it achieved the maximum Z value, it has stopped. So इसमें अभी बहुत कुछ रहता है, तो but we don't need to get into those details. Okay, जैसे ही हमको Cj minus Zj value सारी की सारी या तो 0 या negative आ गई, so we have to stop. You will not be asked to do this. Okay, so आपको बस सिर्फ इतना ही करने का है. Now what we do is normally what would be even asked during the examination, you will be required to solve this using solver. Okay, when I say using solver, so that means और उसके ऊपर से we will have to work out कि what if some conditions change. That means आपका मान लो डीजल एक्स्ट्रा आ जाता है या कुछ और भी चीजें आती हैं, so accordingly अभी जैसे ये क्वेश्चंस है, अच्छा what if I am able to arrange for 1000 liters of diesel, should I buy it? और एक्स्ट्रा अगर मेरे को 1000 लीटर्स मिलता है तो करना चाहिए क्या? 10 ड्राइवर, if 10 drivers they go on a strike, then what would be the impact on my objective value? That means total output of the day. What if 3 drivers have fallen sick? What if I am able to load my truck more? What if I am able to arrange for few temporary drivers? If yes, how many are required? So similar kind of different questions can come. Okay, and as a manager, you are required to take your decision or know what will happen later. So what would be the repercussions of whatever decision that you take? So वो पता होना चाहिए. So how do we get that? How do we answer all these things at the go? Okay, so what we do is
we solve this using solver and we generate a sensitivity report, and based on that sensitivity report हम लोग उसको वर्कआउट करते हैं. फाइन. अभी जस्ट इसको यहीं पर हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इफ वी विश टू. ओके. So if I say number of vehicles used, okay, so ये मेरा डिसीजन वेरिएबल हो जाएगा. And I'm going to get my values here. Now at the same time, total that you will be achieving. Okay, so total resource used. So total resource used would be अगर मैं इधर पर number of vehicles used वगैरह लेने वाला हूँ, so this will tell me equals to number of vehicle into diesel required 100 plus number of vehicles of type B into the diesel required for that type of vehicle will tell me कितना हम लोग इधर पर के लिए यूज करेंगे. करेक्ट. सो मतलब एक तरह से देखा जाए दिस एरे विद दिस एरे, सो मैं डायरेक्टली इसकी जगह पर सम प्रोडक्ट यूज कर सकता था. सो दिस इज गोइंग टू बी माय कॉमन थिंग, सो आई विल मेंटेन इट एज फ्रीज्ड इनटू दिस. इट विल गिव मी कितना मैं यूज करने वाला हूँ. सिमिलरली if I drag it, okay, so I will be able to find my number of drivers used. 1 डाल के देखते हैं 1 2, तो उससे एक आइडिया लग जाता है. 2 मीन्स 400 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो 500 लीटर्स मेरा डीजल यूज हो जाएगा. 1 1 यहाँ पर टाइप ए व्हीकल 1, टाइप बी व्हीकल 2, तो मतलब एक तरह से 3 ड्राइवर मेरे यूज हो जाएंगे. तो मेरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन यहाँ पर एकदम क्लियरली मालूम पड़ रहा है. Now the only thing that is left out is मेरा कोल ट्रांसफर कितना हो रहा है वो नहीं मालूम पड़ रहा है. करेक्ट. सो हम चाहिए तो यहाँ पर एक अलग से लिख लेते हैं टोटल कोल ट्रांसफर्ड we'll take it here. Let's put it a green color. So equals to some product of this and your carrying capacity. Correct. So अगर मैं एक व्हीकल टाइप ए यूज कर रहा हूँ, 2 व्हीकल ऑफ टाइप बी यूज कर रहा हूँ, सो 3 + 3 6 हो जाएगा, +2 8 टन्स. सो I will be able to transfer 8 tons of coal. मेरा ये फॉर्मुलेशन बराबर है. Anything else that you would like to say? No, sir. So my solver will talk about this becomes my objective function. I have to maximize it, and my variable cells which are going to change would be number of type A vehicles and number of type B vehicles, and my constraints would be these values have to be less than or equal to these two values. Correct. Add. And number of type A and type B vehicles also has to be less than or equal to these limitations. These are my total type A and type B vehicles. उसके बाद में मेरे को और कुछ जरूरत नहीं है. दो जिस तरह से मैंने इसको अलाइन किया था तो मेरे को 2 ही कंस्ट्रेंट से काम हो गया. नहीं तो एक्चुअली में दिस इज 1
this is 2, this is 3, and this is 4. Okay, so total 4 constraints, but since we have written it such that we can work around with these two and everything is taken care of. And now we will say solve it using Simplex LP. अब जब मैं इसको solve कर रहा हूँ, okay, I have already solved it. It has already given me some values. अभी देखते हैं क्या हमको देता है वो. The minute I will say okay, it will show me. I also need this sensitivity report. Okay, answer and these limits. करके देखते हैं हमको क्या मिलता है. मेमोरी एग्जॉस्टेड, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया. एक सेकंड, लेट मी जस्ट. सॉल्वर ही नहीं दिखा सर. सॉल्वर ही नहीं दिखा. एक सेकंड, मैं वापस. वो लास्ट का दिखा आपने जो टिक किया ना, ये पहले का कुछ नहीं. ठीक है, एक सेकंड ना, मैं वापस से करता हूँ क्योंकि शायद मेरे इसमें मेमोरी का कुछ इश्यू आया है. तो आई हैव टू कुछ फाइल्स क्लोज कर दूं सो दैट. Okay, let me restart my Excel sheet. कुछ तो प्रॉब्लम दिया उसने मुझे, so I will have to reshare. Is my screen visible? Yes. Just a second. सिस्टम मेरा ऑल ऑफ अ सडन स्लो हो गया. मेरे ख्याल से शायद मेमोरी का प्रॉब्लम दे रहा है. Just are we able to see it? Is my Excel sheet visible? Yes, sir. So let me just remove these values. Anyway, ये हमने temporary डाला था, तो कोई दिक्कत नहीं. We'll work it out again. This becomes my maximization. I will just reset all. So this is my objective function cell. Objective is to maximize. Variable cells would be my number of vehicles, and my constraints would be either I say this less than equal to this, that becomes 1. Then second would be this less than equal to this. Instead वो आजू बाजू में ही है, तो I can simply just say these two values should be less than or equal to these two values. ठीक है, so उस तरह से मैं दो constraints को एक ही साथ में मैंने ऐड कर दिया, so it saves time for me. These two values should also be
less than or equal to these limitations. So that means A cannot have value more than 26, even B cannot have value more than 15. So मैंने उसको भी एक साथ में इधर ले लिया. Now I don't have any other constraints, so cancel करके मैं वापस इधर पर आया. And now we'll see. I have already got these two. I have to change it to simplex LP, make unconstrained variables non-negative, and click on solve. अभी आप देखिए आपको ये बैकग्राउंड में ऑलरेडी उसने वैल्यूज दिखा दी है 20, 10 and this has gone up to 70. Okay, I will say keep the solver solution, but I would like to see all these three reports because these reports are going to help me in answering all those different kind of questions. Okay, so I have already generated these three reports. Can you see these reports? Yes, sir. Okay, number of vehicles used, type A, 1, 2, the original value जो हमने पहले डाली थी, final value is 20 and 10. Original value हमने पहले डाल रखा था, which was giving us a total whole transferred as 8. Now it has gone up to 70. So ये जो पहले जो answer report है will only give you answers, and this is the important thing which it actually talks about. Okay, this says diesel required. Okay, total resources used हमने उधर पर जो टाइटल दे रखा था ना, तो उस हिसाब से it has taken it to be as our RHS. These are our RHS values: 4,000, 30, 20, and 10. It says out of all the 4 resources, these 2 resources, that is जहाँ पर हमने डीजल का लिख रखा था ना, डीजल और ड्राइवर्स का. Okay, these are the 2 which are binding resources. Binding means ये पूरी तरह से यूटिलाइज हो गए हैं, and hence you will see that slack values are 0 for it. Whereas number of type A vehicles and number of type B vehicles are non-binding. That means they are not getting utilized completely. 6 vehicles of type A are still left out and 5 vehicles of type B are still left out. Correct? Let us look at this. सच में ऐसा ही हुआ है क्या? Total resources used 4030. यहाँ पर type A vehicles that we have used is 20. So मतलब 6 type A vehicles बाकी है. Similarly, type B vehicles हमने 10 यूज किए हैं, तो मतलब और 5 type B vehicles बाकी है. Is this what is appearing here? Hello. Yes, sir, the report is visible. So that means report हमको एकदम सही ये बता रहा है. Fine. So type A vehicles 20, type B vehicles 10, total coal transfer would be 70, and these are the 2 resources which are binding. When I'm saying binding, that means they are getting utilized completely. And when we see that a resource is, if that resource is getting utilized completely, that means we need, if we get additional resources for those particular constraints, it will help us in achieving better targets. Okay, these are the ones which are binding you. These are the resources which are binding the performance of your system. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Okay.
So अब जब वो उधर पर वो क्वेश्चन पूछा था, if I am able to arrange for 1000 liters of diesel more, should I go for it? Should I arrange for another 1000 if I am getting it? Should I take it? So can you repeat your question, please? If I am getting additional 1000 liters of diesel, should I take it? So we'll take it, right? Because now the resource is not available. Yes, because that particular resource is getting utilized completely. Okay. If I am getting additional type A vehicle or type B vehicles, should I take it? बॉस बोलता है एक काम करो, अपने पास और इतनी एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं, ये भी यूज कर लो. No, sir. Very good. Why we will not take it? So because we are still left with 6 vehicles of type A. Because we are still left with 6 vehicles of type A and 5 vehicles of type B. और additional लेके कोई फायदा नहीं होगा. But if he says कि additional drivers मिल रहे हैं, what will you do? Should you take it? Yes, sir, we should. Okay. Now, if boss asks you to deliver more coal, okay, 70 ton से नहीं होगा, do more. What will you go and ask for? What kind of resource do you need more? So drivers and DJ. Drivers and diesel. So that means the resources which are binding should be binding and are getting consumed completely should be the one to be asked for. Very good. So अभी इसके बाद में next question is कि कौन सा वाला प्रेफरेबल रहेगा. ठीक है. So let us go to ये इस रिपोर्ट का सब काम हो गया. Are we comfortable with everything that we are having here? Should I move to the next report now? Yes, sir. Yes, sir. Now coming to the next report, it says ये limits को पहले देख लेते हैं. So limits में वो बोल रहा है total coal transport is 70, number of type A vehicles used is 20, type B vehicles is 10. Okay. Objective कितना वो contribute कर रहा है out of total 70 that we have received. Okay, type A vehicles, 20 vehicles are contributing to 30 tons of your coal transfer. ऐसा है क्या? थोड़ा सा इधर पर उल्टा आया है क्योंकि वो हमने लिखने में गड़बड़ कर दिया है. ठीक है, तो ये जो कमेंट्स जो आ रहा है वो उसकी वजह से गड़बड़ है. तो अगर मैं टाइप ए व्हीकल्स अगर मैं 20 ले रहा हूँ, ओके, सो टाइप ए व्हीकल्स 20 है तो 20 into 2, 40 tons are getting contributed by type A and 10 into 3, 30 is contributed by type B. ओके, वो मैंने उधर पर सब बराबर से नहीं लिखा है, इसके लिए मुझे ये थोड़ा सा फाइन ये ऊपर नीचे आना चाहिए था. फाइन, सो आपका 30 और 40 टोटल इज 70. सो ये लिमिट्स वाला रिपोर्ट अपने लिए इतना ज्यादा काम का नहीं होता है. फाइन अप टू दिस. So even if you don't generate this, it is fine. अपने काम के ये दो रिपोर्ट्स हैं. आंसर रिपोर्ट because it tells me
which resources are binding, हाँ कितना उसमें वो रिसोर्स बाकी है जो यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो slack is nothing but unutilized resource. Now coming to sensitivity, it says आपका जो बाइंडिंग रिसोर्सेज है, ओके, उसके लिए शैडो प्राइस दिया हुआ है 0.01 और 1. let us try and understand this कि ये क्या बोल रहा है. हाँ, अपने पास में टोटल ड्राइवर्स 30 हैं, मैंने 30 के 30 यूज हो गए पूरे. ओके, आई एम नॉट लेफ्ट आउट विथ एनीथिंग. It says allowable increase in number of drivers would be 3 and decrease is 5. So 5 tak the solution, that means the sensitivity report that we have got will remain the same. After this we cannot predict based on this sensitivity report. Okay, so अभी इसमें बोल रहा है वो allowable increase 3 का. So हम लोग एक काम करते हैं, we will start increasing our number of drivers. So 30 है, okay, let me make it 31. Fine, and I will run my solver again and let us see what happens to my objective value, what happens to my these resources which are getting utilized. Fine, कितना होना, क्या होना चाहिए? Any guesses? It has said shadow price is 1, so that means if I introduce one driver, it will contribute 1 ton to my objective function. So if I'm increasing the number of drivers by 1, I will be able to increase my objective value. That means total coal transferred by 1. So that means from 70 it will become 71. Let us see. Proper say I will have to run solver. And I just say solve. Okay. It has gone to 71 and my new solution is 22 and 9. So that means shadow price indicates per unit contribution of that particular resource to your objective function. Are we clear? Yes, sir. Right? Now it says, let us look at this allowable increase. अभी allowable increase बोलता है 3 तक, तो मतलब 3 तक बढ़ाएंगे तो हम लोगों का मतलब कितना होगा? 3 टन्स बढ़ जाएगा, बराबर टोटल. So हम इसको 31 की जगह पर let's make it 33 and I run my solver again. So I should get 73. Oh, 33 तक के लिए वो नहीं बोल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है. Let us say, हाँ सॉरी मैं गलत जगह पर चेंजेस किए. यहाँ पर करना था 33. Okay, so let me solve it. So 73 तक उसने इंक्रीज किया है, करेक्ट. एक्सपेक्टेड था every increase in driver will increase 1 ton in your objective function. अब 3 के आगे बढ़ा के देखते हैं. Let's make it 34. Fine. If I run it, ये 73 था, तभी 74 हो जाना चाहिए उस हिसाब से. नहीं हुआ. It has remained at 73.
33 only. 34 के बाद में your number of drivers utilized is 33, 26 type A vehicles and 7 for type B vehicles. So आपका सिर्फ 33 ही यूटिलाइज हो रहा है. So that means ये जो लिमिट्स जो डिफाइन की हुई है उसके बाद में आपका जो रिसोर्स है, ये जो रिसोर्स जो बाइंडिंग रिसोर्स था will no longer remain binding. Okay. Similarly, let's try and reduce it. 30 से नीचे तक अगर हम करेंगे, 30 से अगर हम लोग 4 नीचे करते हैं तो 30 पर हम लोगों को 70 मिला था, 70 टन. सो अगर मैं 4 ड्राइवर्स रिड्यूस करता हूं, अगर मेरे 4 ड्राइवर स्ट्राइक पे चले गए तो 4 टन मेरा कम हो जाना चाहिए बिकॉज शैडो प्राइस इज 1. सो लेट मी डू दैट ऑल्सो. सो इसको 26 मैंने कर दिया and I run my solver again. Or it gives me a solution equals to 66. So that means वो जो limits जो वो दिखा रहा है वहां पर allowable increase or allowable decrease is indicating that within these limits the shadow price of 1 ton per driver will be applicable. Beyond this, we cannot comment. Beyond this, the possibility is the resources may not remain binding resources. Clear up to this? Sir, hello. Yes. So when we are decreasing the number of drivers by 4, so the value 26, we have to enter it in total available, right? Because that is your number of resources, total resources which is available. And in case of total resource used, so the value will be as it is. वो तो automatically आती है ना बेटा, it's a formula based ना. Okay, yes, yes. वो automatically आएगी. ये आपकी static field है. There is no formula here. So these are your limitations, constraints, fixed values. Yes, sir. Got it. Similarly, अभी shadow price for this, यहाँ पर आपको 0.01 दिया है. That means 100 liters of diesel will contribute 1 ton of coal transfer. So मैं इसको चाहिए तो इसको वापस से मैं 30 पे सेट करता हूँ and 100 liters. I am adding 100 liters to my 4000 liters. So 4100 हो गया. अभी ये मेरा 70 की जगह पर 71 आना चाहिए. So if I solve it, so am I getting it as 71? Correct, na? So that means shadow price indicates per unit contribution to your objective function. अगर आप शैडो प्राइस में जितना भी चेंजेस करोगे उस हिसाब से वो शैडो प्राइस के ही हिसाब से वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा. मैंने जानबूझ के 100 लिया क्योंकि 0.01 अगर से फर्क पड़ता तो ज्यादा कुछ डिफरेंस अपने को दिखता नहीं था. सो 0.01 की जगह पर मैंने उसको इंटू 100 किया ताकि मेरे को 1 का डिफरेंस दिखे. ठीक है. और इसको अगर मैं मान लो 3999 अगर रखता था तो देखिए आपको कैसे वैल्यूज आते थे. 69.99 क्योंकि 0.01 का डिफरेंस आएगा ना. 1 लीटर मैंने कम किया तो इतने ही टन ट्रांसफर हो गया. इधर तक समझ में आया? क्लियर है? Yes. So it helps you in terms of understanding or rather taking decision at the run time. वो टाइम पर आपके पास में अगर सिर्फ सेंसिटिविटी रिपोर्ट है तो आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हो. परफेक्ट. कुछ और एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद से करके देखना. देखो ये चीजों को चेंज करके क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ इधर पर बोला है क्या, ये देखिए.
objective coefficient 2, 3, allowable increase, allowable decrease. Correct? Next session we will take one more question on sensitivity, which will talk about also reduced cost.